Assalamu alaikum, everyone. Let's begin. So today we are going to be doing this paper, May June 2022, paper 3 variant 2. इस सेशन का हमने ऑलरेडी एक पेपर कर लिया हुआ है, पेपर 3-1, पेपर 3 का वेरिएंट 1, उसका थ्रेशोल्ड सबसे लो था इस सेशन के अंदर, वो हमने कंप्लीट पेपर किया। अब जो बाकी दोनों वेरिएंट्स हैं पेपर 3 के 2 and 3, इनके हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे होंगे। वी विल नॉट बी डूइंग द कंप्लीट पेपर, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस कर रहे होंगे। जो भी हमें थोड़ा सा मुश्किल लगेगा वो वाले क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। बट आई स्किप द वंस व्हिच आर रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो मैं नहीं कवर करूंगा, ठीक है। So that's the plan for this session. Those of you who are joining for the very first time, please make sure that you subscribe the channel and also like the stream. And if you look at the description of this video, you'll find a lot of other useful content there. आपको पूरे syllabus की recordings मिल जाएंगी, paper 1, paper 3, M1 and S1, along with some topical practice. And you also have a link to the link to a playlist in the description. जिसमें आपको quick revision videos मिलेंगी. They're very helpful for a lot of students before their exams. Hundreds of students every year, they benefit from those videos. You can have a look at that as well. और जो बाकी yearly past papers हैं, उस जो मैंने अभी तक सॉल्व किए हैं 2021 के और 2022 के, and also 2023 March papers, they are also there in the description. उसका link भी जो है description में है, उसकी playlist का link by the name of AS and A-level math yearly past papers. So you can find all of that content there as well. You'll find that useful. Now today, let's do this paper, May June 2022. इसके हम कुछ selected questions कर रहे होंगे, which are relatively more complicated. Okay, let's start with this then. Okay, so question number 1, this is on logs. A lot of people find logs complicated for some reason. So let's do this question and start from this. We have to solve this equation, giving our answer correct to 3 decimal places. Now, how do we start? You see, you have log in two terms. इस term में log आ रहा है, इस term में log आ रहा है, दोनों के अंदर log आ रहा है, और एक term के अंदर log नहीं है। तो इस तरह के equations में one possibility is that we take all the log terms to one side. So we could write this as ln of e raised to power 2x plus 3 minus ln of 3. On the other side, we have 2x. Okay, so this is what we have. अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम ये कोशिश कर सकते हैं कि किसी तरह से ln को रिमूव कर दें इसमें से. How would that work? You have subtraction outside log. log के बाहर दो terms minus हो रही हैं, तो division law use करके आप क्या कर सकते हैं? You can divide them inside log and write it like this. Division law apply करके you can say this is ln of e raised to power 2x plus 3 divided by 3. Left side को आप इस form में लिख सकते हो. What do you have on the right side? On the right side, you have 2x. Okay. And now remember the base of ln is e. अगर हमने इसको दूसरी साइड पे लेकर जाना हो तो ये क्या होता है? ये 2x की जाके बेस बन जाएगी राइट साइड के ऊपर. Okay. So the equation can therefore be converted to this form. We can say this is e raised to power 2x plus 3 divided by 3. And on the other side, when this base e goes to the other side, it's going to become e raised to power 2x on that side. All right. Now we take this 3 to the other side, multiply it there. What does that give us? E raised to power 2x plus 3, that equals 3 e raised to power 2x. E वाली terms को एक side पे ले जाए. अगर हम इसको right पे ले जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? 2 e raised to power 2x. And that gives us e raised to power 2x equals 3 over 2, or you can say 1.5. And now we need to find the value of x from this. We can take ln on both sides. This is essentially e raised to power 2x equals 1.5. If we take ln on both sides here, it's going to give us ln of e raised to power 2x equals ln of 1.5. And now this power that we have on e, that's going to come down here, and we're going to be left with 2x into ln e. On the other side, we have ln of 1.5. Remember, ln e 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा. 2 को जाके वहां पे जाके डिवाइड कर दें, and we're going to get ln of 1.5 divided by 2. You can just evaluate this on a calculator and see what that turns out to be. ln 1.5 divided by 2. Let's evaluate this. This is giving me
0.2027. अब उसने क्वेश्चन के अंदर कंस्ट्रक्शन दी है, उसने कहा है you have to give your answer correct to 3 decimal places, so you have to round it off and say this is 0.203, and that's what your final answer turns out to be here. That's question number 1 from this paper. Okay, that's the value of x that we get from this. All right, now let's move on. That was question number 1. Question number 2 is you have to solve this equation. It's a trigonometric equation. It doesn't look that difficult. इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, cos 2 theta की आइडेंटिटी अप्लाई कर दें. ये हो जाएगा 3 into 2 cos square theta minus 1. On the other side you have 3 cos theta plus 2. ये आइडेंटिटी अप्लाई कर ली. इसके बाद तो ये एक तरह से P1 ट्रिग्नोमेट्री ही है. आप इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके 2 वैल्यूज ऑफ कॉस आएंगी, उनमें से आप देखेंगे अगर दोनों वैलिड है तो दोनों से आप सॉल्यूशंस निकाल लेंगे. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, यू कैन ट्राई दिस, यू शुड बी एबल टू डू इट. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 is not that difficult. I'm going to move on. Question number 3, this is on polynomials ax cubed plus x squared plus bx plus 3. It's denoted by p of x. It's given that p of x is divisible by 2x minus 1, so this is a linear factor, and that when p of x is divided by x plus 2, the remainder is 5. अच्छा देखें, दोनों linear डिवाइजर्स हैं. आप इन दोनों के अंदर रिमाइंडर थ्योरम यूज कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम. और तो आप फॉर एग्जांपल एक दफा इस पॉलिनोमियल के अंदर x इक्वल्स 1/2 इनपुट करेंगे और उसको 0 से इक्वेट कर देंगे बिकॉज ये फैक्टर है. और फिर एक दफा आप क्या करेंगे, इसके अंदर x इक्वल्स -2 इनपुट करेंगे बिकॉज इससे डिवाइड करें x + 2 से, और उसको आप क्या करेंगे 5 से इक्वेट कर देंगे बिकॉज द रिमाइंडर इज 5 इन दैट केस. सो वी गेट 2 इक्वेशंस फ्रॉम दैट, और उससे a और b की वैल्यूज आ जाएंगी. ठीक है, सो दिस इज आल्सो नॉट दैट डिफिकल्ट. इट्स अ प्रीटी स्टैंडर्ड, रिपीट हो रहा होता है पेपर्स में. You should be able to do this. Let's move on. Question number 4. Okay, now let's do this. This seems to be equals cos cube x into square root of sin x. We have this equation of a curve given, and it's given that the curve has one stationary point in the interval 0 to pi over 2. एक उसने बता दिया stationary point है इस interval के अंदर. We need to find the x coordinate of the stationary point, giving our answer correct to 3 significant figures. Okay, so stationary point का x coordinate निकालने, that's all that we have to do here. We have the function given, the equation of the curve given, that looks like this. Cos cube x, this is just a short way of writing cos of x whole cube. That's what the actual function is, right? And then square root of sin x, we can write that as sin x whole raised to the power 1/2. This is what the actual function is. Okay. Now, for finding the stationary point, we have to find the derivative first. It's a product. Product का derivative हम कैसे find करते हैं? We have to apply the product rule here. Let's say this is u, this is v. We say uv dash plus vu dash. This is what we have to do. Let's see what dy over dx turns out to be. U as it is, so that means cos of x whole cube as it is into derivative of v. Sin x whole raised to power 1/2 का derivative क्या होगा? Power से multiply करेंगे, power rule इस पे apply होगा पहले, 1/2 से multiply किया, and then sin x remains as it is. Sin x की power में से 1 minus हो जाएगा और यहाँ पे -1/2 आ जाएगा. And then you have to multiply with the derivative of the base of the power. Sin x का derivative क्या होगा? Cos x. You also have to multiply by that. This is uv dash. Okay, this part is just uv dash. Then we also have to do vu dash. Okay, so now v as it is, that means sin x whole raised to power 1/2 as it is into derivative of u. इसके derivative क्या होगा? 3 से multiply किया, cos की power में से 1 minus कर दिया, so power 3 है पहले, तो power 2 हो जाएगी. And then you have to multiply with the derivative of the base of the power. So cos x का derivative क्या होगा? Cos x का derivative minus sin x होता है. We multiply by minus sin x here for that reason. Okay, so this is what dy over dx turns out to be. Now, since you're looking for a stationary point, we have to put this derivative equal to 0. Let's do that. 0 से equate कर दें. देखें आपके पास right side पे क्या आता है? You have 1/2 into, you have cos cube here and cos x here as well. So that's going to become cos raised to power 4x divided by sin x whole raised to power 1/2. That's the first term.
And then the second term has a negative sign here, तो यहाँ पे minus लगा दें, sin की power और 3 भी है in fact, so -3. Then you have sin x here and sin x here. एक की power 1/2 है, एक की power 1 है, तो ये total क्या हो जाएगा? Sin x raised to power 1/2 plus 1, that becomes sin x raised to power 3/2. Then you have cos x, we can write that as cos square x. That's the equation that we get. Okay. Now what we can do is we can get rid of the fraction somehow. Sin x whole raised to power 1/2 आ रहा है denominator में और ये 2 भी आ रहा है denominator में. अगर हम पूरी equation को multiply कर दें 2 sin x power 1/2 से, तो ये fraction खत्म हो जाएगी, right? एक तरह से आप LCM ले रहे हैं तो एक ही स्टेप में ये LCM की तरह कर रहे हैं, ये इस डिनोमिनेटर से बस मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म में आपके पास बचेगा cos raised to power 4x. जब 2 से मल्टीप्लाई होगा सेकंड टर्म से तो वहां पे 6 आ जाएगा. sin x raised to power 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 3/2 पावर में 1/2 ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? sin square x, then you have cos square x, and this equals 0. This is the equation that we now need to solve. Okay, how do we solve this equation? We can take cos square x common here, right? दोनों terms में cos square आ रहे हैं, तो cos square अगर हम यहाँ पे common ले लेते हैं, what are we left with inside? Cos square x minus 6 sin square x equals 0. Now that means either cos square x equals 0 or cos square x minus sin square x, that equals 0. Okay, now how do we think about this? या तो आप दोनों को cos square में convert कर दें, दोनों को sin square में convert कर दें, या tan भी कर सकते हैं अगर आप sin square को दूसरे साइड पे ले जाएं और फिर cos को उधर डिवाइड कर दें, वो tan में भी convert हो सकता है. So you can do it any way you want. So one possibility is that I say let's replace sin square x with 1 minus cos square x. Okay, what am I left with if I do this? I have cos square x minus 6 plus cos square x, that equals 0. Okay, so now that is interesting because this is not giving me anything useful. Let's check this again, minus 6. Okay, so I made a mistake there. Yeah, so this should have been 6 cos square x, and then it should be okay. यहाँ पे 6 होना चाहिए, and then it should work. Okay, so we have 7 cos square x on the left side. On the right side, I have 6, and this is going to give me cos square x equals 6/7. ठीक है, ये दो हमारे पास केसेस आ गए. Cos square x either equals 0 or cos square x equals 6/7. Now we need to solve these equations. First case में देखें cos square x equals 0 से हमें क्या मिलेगा? Cos of x equals 0. अब cos x 0 कब होता है? इसमें क्वाड्रेंट्स वाला मेथड नहीं वर्क करता बिकॉज ये तो आपका जो एंगल होता है ये लाइन के ऊपर लाया करता है. तो जब आपके पास cos x की वैल्यू या sin x की वैल्यू 0, -1 या 1 होती है तो आपको ग्राफ का सोचना पड़ता है. cos के ग्राफ में x की वैल्यू 0 कब cos की वैल्यू 0 कब हो रही होती है? दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ cos looks like, right? रफली 0 हो रहा होता है रेडियंस में, डिग्रीज में. दिस इज इन रेडियंस. 0 आपके पास हो रहा होता है एक तो π/2 के ऊपर हो रहा होता है, फिर 3 π/2 के ऊपर हो रहा होता है. आप देखें इंटरवल क्या गिवन है, 0 से लेकर π/2 तक, यानी दैट्स जस्ट द फर्स्ट क्वाड्रेंट. और π/2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है. जब π/2 इंक्लूडेड नहीं है तो ये आपका पॉसिबल आंसर नहीं हो सकता. तो आप इसमें क्या कहोगे? you'll say there is no solution in the given interval. इसको आप इग्नोर कर दोगे. ठीक है, आप कुछ भी आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिख दोगे, या बस इसको इग्नोर कर दें. आपने ये क्लियरली शो करना है कि इसको आप इग्नोर करें, इससे कोई आंसर आपको नहीं मिल रहा. सेकंड केस देखते हैं. सेकंड केस में आपके पास क्या आ रहा है? cos square x equals 6/7. नाउ रिमेंबर whenever you take square root you have to put plus minus. So इसका अगर आप स्क्वायर रूट लोगे 6/7 का, let's see what this turns out to be. 6/7 and square root of this is giving me, no, I'm sorry, I did that wrong. 6/7 square root of this. Yeah, so this turns out to be cos x equals plus minus
0.9258. That's the value of cos x that we end up getting from this. अब हम क्या करते हैं, basic angle figure out कर लेते हैं. Cos alpha equals 0.9258. Let's find the basic angle from this. Okay. Now remember, आपके पास ये radians में दिया हुआ है. So radians में cos inverse निकालते हैं इसका. Make sure your calculator is in the correct mode. Okay, so cos inverse of this is giving me, so alpha turns out to be 0.3876. That's the value of alpha that I'm getting. Okay. अच्छा देखिए आप कौन से quadrant में हो सकते हैं. That's what you need to think about now. Now it says cos is equal to plus minus 0.9258. अब ये तो कोई भी quadrant हो सकता है चारों में साइन के हिसाब से, लेकिन आप देखें क्वेश्चन के अंदर उसने आपको क्या दिया हुआ है, लिमिट्स 0 से लेकर pi/2 तक. That means even though all 4 quadrants are possible considering the sign, लेकिन जो उसने इंटरवल दिया हुआ है उस इंटरवल में सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आ सकता है, तो बाकी हम नहीं कंसिडर करेंगे, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू ही कंसिडर करेंगे. So the value of x therefore turns out to be 0.3876. आप इसको पूरा लिख सकते हैं if you want. अगर उसने क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई कोई, उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है यहाँ पे that you have to give your answer to 3 significant figures, so you have to make sure that you follow that instruction. So you give your answer like this. You say this is 0.388 to 3 significant figures. That's the value of x that we end up getting from this. All right, so that was question number 4 from this paper. Eid Mubarak Labib to you as well and to everyone else in this class. I hope this makes sense. Question number 4. Let's move on to the next one. Okay, so we have question number 5 here. It says by sketching a suitable pair of graphs, show that this equation has only one real root. Second part में इसका अपने verification करनी है. Third part में iterative formula use करना है. It's not that difficult. आप कर सकते हैं. I'm going to skip this. इसका graph जब draw करेंगे, आपने सिर्फ क्या करना है? If you do not remember the shapes of the graphs exactly, आपको सिर्फ यह करना है. X की कोई values ले लेनी है. Remember, log is only defined for positive numbers. तो आपने x की values लेनी है 0 से ज़्यादा. ठीक है. So कुछ values दें, उनको plot कर दें, आपका ग्राफ बन जाएगा. बट यू शुड रिमेंबर कि रफली लॉग की शेप क्या होती है, और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसकी शेप तो आपको पता होनी चाहिए. इट्स गोइंग टू बी एन इन्वर्टेड यू लाइक दिस. लेकिन फिर आपको देखना पड़ेगा उस इंटरवल के अंदर x ग्रेटर देन 0 ये किस तरह से आ रहा होगा. आई थिंक इसका सिर्फ ये वाला पार्ट होगा, और मे बी नॉट. तो आप इसके वैल्यूज प्लॉट कर लेंगे. आपको टर्निंग पॉइंट शो करना है properly. That's going to be important. और x इंटरसेप्ट भी यहाँ पे शो कर सकते हैं, because it's not that difficult to find the x-intercepts of this function y equals 3x minus x squared. So graph आप draw कर लेंगे, लेकिन graph draw करके आपको ensure करना है that you write a statement at the end कि since that graph has only one point of intersection, that is why there is only one real root. Okay, आप ग्राफ बना भी देंगे और वो स्टेटमेंट अगर नहीं लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो ये आप कर लें. This is not that difficult. It's a pretty standard question. Second part में भी आपको सिर्फ वेरीफाई करना है कि वो 2 पॉइंट्स के दरमियान में रूट लाई करता है, और थर्ड में सिर्फ iterative formula यूज करना है. It's not that difficult. I'm going to skip this and move on from this. Okay, now this is question number 6. This is differential equations. Let's have a look at this one. It says the variables x and y satisfy the differential equation dy by dx equals x e raised to power y minus x, and y equals 0 when x equals 0. Solve the differential equation, obtaining an expression for y in terms of x. Okay, so now we need to solve this differential equation. Remember, in order to be able to solve a differential equation, you first need to separate the variables, right? Now, how do we separate variables? Remember, आपके पास dy by dx अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड पर आ रहा है, तो आप वेरिएबल जब सेपरेट करते हैं तो आपको क्या करना होता है, y वाली टर्म्स आप dy वाली साइड पर लाएंगे और dx राइट पर चला जाएगा, x टर्म्स राइट साइड पर आएंगी. So how do we separate these variables? The problem is we have e raised to power y minus x. What we can do is we can use indices rules, and we can write this as, we can write e raised to power y minus x as e raised to power y
divided by e raised to power x, right? आपके पास ये रूल होता है इंडसेस का, if you have a raised to power x over a raised to power y, that becomes a raised to power x minus y, right? अब यहाँ पे आपके पास ये राइट साइड वाली फॉर्म है, we can write this in the form that we have on the left side. इसको फ्रैक्शन में इस तरह से लिख सकते हैं, दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं. अब हमें सिंपली क्या करना है, y वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले जाना है और x वाली टर्म्स को राइट पे रखें. तो e रेज़ टू पावर y को लेफ्ट पे ले जाते हैं, तो उसको लेफ्ट पे लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस y dy. On the right side we're going to have x into e raised to power minus x, और dx भी हमने उठा के यहाँ पे राइट साइड पे लिख लिया. At this point, we have separated the variables. You're going to get 1 mark just for doing this, just for separating the variables. Now we need to integrate both sides, integrate the left hand side and the right hand side. अब left side पे dy आ रहा है, तो इसको आप with respect to y integrate करेंगे. e raised to power minus y की integration क्या हो जाएगी? e raised to power something की integration वही रहती है, e raised to power that thing, so it remains e raised to power minus y. But then you have to divide by the derivative of minus y, which is minus 1. उससे आपने डिवाइड कर दिया. That's the integral that you get on the left side. Now what about the right side? Right side के आपके पास right side पे आपके पास एक प्रोडक्ट है, x multiplied by e raised to power minus x. We have two expressions multiplying here. प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करने का आपके पास सिर्फ एक ही मेथड है, that is integration by parts. Unless उसने क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूशन दी होगी, तो फिर तो आप सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे. लेकिन जब भी सब्स्टिट्यूशन होगी वो क्वेश्चन में बताएगा आपको. तो अगर उसने सब्स्टिट्यूशन नहीं बताई हुई, जहां पे उसने यहाँ पे नहीं बताया हुआ, तो प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करने का हमारे पास सिर्फ एक मेथड है, दैट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. नाउ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला इज रिटन लाइक दिस इन द फॉर्मूला शीट. इट सेज u into dv over dx, इसका इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, दैट्स इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रल ऑफ v into du over dx with respect to x. ठीक है, इसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, it becomes uv dash का इंटीग्रल, that is equal to uv minus integral of vu dash. Okay, that's roughly what it looks like. फॉर्मूला शीट में आपके पास ये ऐसे लिखा होगा. ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, आपको फिगर आउट करना होता है आपको क्या चीज x लेनी है और क्या चीज u लेनी है और क्या चीज dv over dx लेनी है. For that you can use this rule ILATE. Whatever is on the left side is going to be u, whatever is on the right side is going to be dv over dx. Now let's see which two functions we have here. We have an algebraic function, which is x, and the other function that we have is exponential function. That's the other function. Exponential right पे आ रहा है, तो वो dv over dx होगा. ILATE में exponential right पे आ रहा है, तो वो dv over dx होगा. और ILATE में algebraic left पर आ रहा है, a और e में से a left पे और e right पे है, तो algebraic हम u ले लेंगे. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करनी है, taking these as the values of u and dv over dx. Let's do that. Let me just write that here on the side. क्या यूज करेंगे, u equals x and dv over dx is equal to e raised to power minus x. अब u से हम क्या करेंगे, du over dx निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे. x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, और dv over dx से हम इसका इंटीग्रल निकालेंगे, उससे हमें v मिलेगा, वो क्या होएगा, e raised to power minus x divided by minus 1, and that turns out to be e raised to power, or in fact minus e raised to power minus x. ये वैल्यूज बस आपने अब क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले फॉर्मूला के अंदर इनपुट कर देनी है. Let's do that. Let's input these values in the integration by parts formula. Okay, so what do we have here? uv, so u into v, let's write that here. U multiplied by v, u is x into v, which is minus e raised to power minus x. Subtract from that integral of v as it is, which is minus e raised to power minus x, into du over dx. du over dx क्या है, 1, so we have 1 here with respect to x. ये आपने इंटीग्रेशन में पार्ट्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लिया. Now what do we have on the left side? On the left side we have minus e raised to power minus 5. On the right side we have minus x e raised to power minus x. Let's simplify this. We have this negative sign and this negative sign, so minus minus plus हो जाएगा, and we are left with e raised to power minus x with respect to x. इसके integration. Now let's evaluate this. On the right side we have minus x e raised to power minus x.
plus e raised to power minus x का integral क्या हो जाएगा? It's going to be e raised to power minus x divided by minus 1. But remember, whenever you integrate like this, you have to put plus c on any one of the two sides as well. अब right side पे यहाँ पे plus c डाल दें, and that's what your equation turns out to be. So this is minus e raised to power minus 5 equals minus x e raised to power minus x minus e raised to power minus x and plus c. Okay, यहाँ तक हमने कर लिया. हमें find क्या करना था? Y in terms of x. We have another piece of information that's given here, and that is a point which is y equals 0 when x equals 0. What we can do is we can input this point in the solution that we're getting to find the value of c. X की value 0 input करनी है और y की value 0 input करनी है. Let's do that here. We say let's input x equals 0 and y equals 0. And this gives us minus e raised to power 0, that equals minus 0 e raised to power 0 minus e raised to power 0 plus c. Now, the left side gives us minus 1. On the right side, we have 0 minus 1 plus c. And the value of c turns out to be 0 here. Okay? c हमारे पास 0 आ गया. अब हम क्या करेंगे? इसको वापस इसमें input कर दें. And the equation that we're getting is minus e raised to power minus 5 equals minus x e raised to power minus x minus e raised to power minus x. And now we need to make y the subject somehow. अब देखें सारी टर्म्स में माइनस आ रहे हैं, तो इनको पॉजिटिव कर लेते हैं. So this is going to become e raised to power minus 5 minus, in fact, x e raised to power minus x plus e raised to power minus x. How do we make y the subject now? y पावर में आ रहे हैं, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा? इसको इस पे log लेना पड़ेगा दोनों साइड्स के ऊपर, right? So if we take log on both sides, that is going to give us ln of e raised to power minus 5. On the right side, we would have ln of x e raised to power minus x plus e raised to power minus x like this. Remember, ये नहीं कर सकते कि दोनों टर्म्स के ऊपर अलग-अलग log लगा लें. That would be wrong. So if you have a equals b plus c, you cannot say that if you take ln, it's going to become ln b plus ln c on the right side. That's wrong. This is actually going to be ln of a equal to ln of b plus c. पूरे के ऊपर ln लग रहा होगा. जो पूरा एक्सप्रेशन है आपके पास, उस पूरे के बाहर आपके पास ln आ रहा होगा. So this is what we end up getting. Now what we can do is we can take minus y down here, and it becomes minus y ln e. That equals ln of x e raised to power minus x plus e raised to power minus x. ln e is 1. So we are going to get y equal to minus ln of x e raised to power minus x plus e raised to power minus x from this. And that is our final result. This is y in terms of x. This is what we were looking for. ये आपका first part में आ गया. ठीक है? That's the result that we get from the first part here. Let's look at the next part now. Now it says find the value of y when x equals 1, giving our answer in the form a minus ln b, where a and b are integers. Okay, now that doesn't look that difficult. आपके पास y in terms of x आ चुके हैं already. उसमें बस input करना है आपको. So this is minus ln of x e raised to power minus x plus e raised to power minus x. All we have to do is input x equal to 1 and see what that gives us. Minus ln of 1 e raised to power minus x plus e raised to power minus x, and that gives us minus ln of 2 e raised to power minus x. Okay. Now, can we just take minus x down here and multiply with minus here? We can't do that. अभी power law नहीं लगा सकते because minus x सिर्फ e की power है, वो 2 की power नहीं है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इस पे हम प्रोडक्ट रूल लगा के इसको स्प्लिट कर सकते हैं. माइनस बाहर है, उसको वैसे माइनस रहने दें. अंदर आपके पास क्या आ जाएगा? ln2 plus ln of e raised to power minus x.
And now we can bring that power down and it becomes ln 2 minus x ln e. ln e तो 1 ही होता है, so it becomes minus ln 2 plus x. No, okay, so x की वैल्यू में यहाँ पे इनपुट करनी थी. Okay, I'm sorry about that. So I should have input it right here as well. इसको हम यहाँ पे इनपुट कर देते हैं. x की वैल्यू भी 1 डाल दें और उसको इनपुट पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So x की वैल्यू भी यहाँ पे 1, इधर e की पावर में जो x आ रहा है उसकी वैल्यू भी 1 थी, तो मैं यहाँ पे भी 1 डाल दिया. So this is what we end up getting then, 1 minus ln 2. All right, y equals ln 2. That is what y equals 1 minus ln 2. That is what we were looking for. ठीक है, इसने एग्जैक्ट फॉर्म में आंसर मांगे a minus ln b वाली फॉर्म के अंदर, so आप इसको इसी तरह छोड़ देंगे. You are not going to convert it to decimals. All right, let's move on and have a look at question number 7 now. Question number 7 में वो कहता है the equation of a curve is x cube plus 3x square y minus y cube equals 3. You need to show that dy over dx equals this. Now, this is also a pretty standard question. Implicit differentiation का इसी तरह से बहुत दफा repeat हो रहा होता है. और देखें second part भी बिल्कुल वही standard है. आपको क्या करना है, coordinates find करने हैं when the tangent is parallel to x-axis. Now, let's do this, although it keeps getting repeated over and over again, the same type of question. But let's do this because implicit differentiation is slightly confusing sometimes for some people. So let's try this. We have x cubed plus 3x square y minus y cubed. This equals 3. We need to show that dy over dx equals this thing. Now, this is an equation in which y is not the subject. The y subject नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता है? Implicit differentiation use करनी पड़ती है. What we do is we say, let's differentiate both sides with respect to x. Now, what's the derivative of x cubed with respect to x? 3 multiply हो जाएगा, x की power में से 1 minus हो जाएगा, so it's 3x square. And then you multiply with the derivative of x, which is 1, plus 3x square y. This is a product, इसका आपको product rule use करना पड़ेगा. 3 into x square y का derivative. X square y में हम क्या कर सकते हैं? We can say this thing is u. X square is u, y is v. So derivative इसका क्या होगा? uv dash. So u as it is, that means x square as it is, into derivative of v. Y का derivative क्या होगा with respect to x? That is going to be dy over dx. Plus vu dash, that means v as it is, so y as it is, into derivative of x square, which is 2x. Okay, ये आपका second term का derivative हो गया. Then you have minus y cube. Again, apply the power rule. 3 gets multiplied. You subtract 1 from the power, so you have y square here. And then you have to multiply with the derivative of the base of the power. Y का derivative क्या है? dy over dx. You also have to multiply by that. And now on the right side, you have 3. What's the derivative of 3? The derivative of 3 is 0. यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा. Okay, now we make dy over dx the subject. Let's simplify the expression on the left side first of all. This is going to give us 3x square. In fact, what we can do is we can just divide the whole equation by 3 because हर term के अंदर 3 आ रहा है. तो अगर आप 3 से divide कर देंगे पूरे equation को, तो आपके पास क्या बचेगा? x square plus x square dy over dx plus y into 2x, that's 2xy, minus y square into dy over dx. So what I've done is I have divided the whole equation by 3. ठीक है? Now we need to make dy over dx the subject. तो उसके लिए हम dy over dx वाली terms को इसी side पे रहने देते हैं. उनमें से dy over dx common ले लेते हैं. एक हमारे पास x square आ रहा है यहाँ पे और दूसरी term के साथ minus y square. So we have x square minus y square here. Take everything else to the other side, so that gives us minus x square minus 2xy on the other side.
Now divide this thing on that side, and that is going to give us dy by dx equal to minus x square minus 2xy divided by x square minus y square, and that's your dy by dx. ठीक है, डेरिवेटिव तो आपने फाइंड कर लिया, but it's not exactly the form that's given in the question there. उसमें क्या है, आपके पास न्यूमरेटर में प्लस आ रहा है और डिनोमिनेटर में ये टर्म्स जो है ये इंटरचेंज हुई भी हैं. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे वहां पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है. तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन ले सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर इस माइनस साइन को हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं. अगर उसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाय y square minus x square. This is one way to do this. Another possibility is आप इस स्टेप पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दें. न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो उससे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो वो आ जाएगा y square minus x square. That's another way of thinking about this, because you can multiply and divide a fraction by the same number, right? तो -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें अगर आप, तो आपके पास वही चीज आ जाती है. ठीक है, so that's how you do it. That was part 1 of this question. Let's move on. In the second part, it says find the coordinates of the point on the curve where the tangent is parallel to the x-axis. Now you have already found the derivative dy over dx. आपने find कर लिया हुआ है. That's x square plus 2xy divided by y square minus x square. And now you're given that we need to find the coordinates of the points on the curve where the tangent is parallel to the x-axis. So because यहाँ पे लिखा हुआ points on the curve, so there's going to be more than one answer. Okay, so keep that in mind. The tangent is parallel to x-axis. That means it's a situation like this कि आपके पास इस तरह की कोई curve है और एक point ऐसा है जहाँ पे tangent x-axis के parallel है. अब उस point पे क्या होगा, gradient 0 होएगा. ग्रेडियंट 0 है तो उसका क्या मतलब है, डेरिवेटिव जो है वो 0 होएगा. तो आपने एसेंशियली स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है. दैट्स व्हाट दे आर आस्किंग यू फॉर. कभी कभी यहाँ पे वो कहते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस. पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब होता है कि वहां वहां पे कर्व आपकी कर्व की डायरेक्शन वर्टिकल होगी, उसमें आपका ग्रेडियंट क्या होता है, अनडिफाइंड होता है. उस केस में आप क्या करते हो, डेरिवेटिव के डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट कर देते हो. लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब है कि डेरिवेटिव की वैल्यू, पूरे के डेरिवेटिव की वैल्यू 0 के इक्वल है. तो आप उसको बस 0 से इक्वेट कर दें. 0 से इक्वेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाय y square minus x square that equals 0. Now this is going to go to the other side and multiply by 0, and you're going to be left with just x square plus 2xy equal to 0. So you have x square plus 2xy equal to 0 like this. Now we can take x common from this. We have to solve this equation, right? We can take x common, and that leaves us with x plus 2y inside, and we get either x equals 0 from this or x plus 2y equals 0, and we have x equals minus 2y from this. Okay, so these are two expressions that we're getting from this equation. Now what about the corresponding values for y? Where do we get that from? Get those from? Now remember, एक तो आपके पास x और y का ये रिलेशनशिप आ गया. अब ये जो पॉइंट आप फाइंड कर रहे हैं ये कर्व के ऊपर लाया करता है ना, तो दिस पॉइंट आल्सो शुड सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द कर्व. दिस इक्वेशन ऑफ द कर्व दैट वी गिवन, तो उस कर्व को भी ये पॉइंट सैटिस्फाई करना चाहिए. अगर हम वो कर्व इक्वेशन यहाँ पे लिखें, दैट्स x क्यूब माइनस plus 3x square y minus y cube equals 3. This is the equation of the curve. Now, whatever points that we're looking for, they also lie on this curve. So they should also satisfy the equation of this curve. तो हम क्या करते हैं, इस कर्व के अंदर ये दोनों चीजें इनपुट कर देते हैं. इस कर्व के अंदर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं लेट्स इनपुट
let's input x equals 0 once. That's one thing we do. And also input x equals minus 2y. And let's see what corresponding values for y we get from this. When we input x equals 0, that is going to give us 0 cube plus 3 into 0 square will be 0 ho jayega, minus y cube equals 3. And we get y cube equal to minus 3 from this. And now we take cube root on both sides and see what that gives us. Y will turn out to be minus 3 whole raised to power 1 over 3. ये आप calculator से evaluate कर लें, उसने exact तो नहीं मांगा हुआ यहाँ पे. No, so they haven't really asked for exact answers. तो आप इसको decimals में भी लिख सकते हैं if you want. That's your choice. Exact छोड़ दें तो वो भी सही है. दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं. So this is minus 3 whole raised to power 1 over 3. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या cube root वाली form में लिख लें. So one point that we're getting is 0 and minus 3 whole raised to power 1 over 3. This is one point, one stationary point that we have. Now, next we have to input x equals minus 2y. इसके अंदर x की जगह पे minus 2y डाल देते हैं. Let's see what that gives us. Minus 2y whole cube plus 3 into minus 2y squared into y minus y cube equals 3. From this, we get minus 8y cube plus 3 into 4y squared into y minus y cube equals 3. Simplify this, and this gives you minus 8y cube plus 12 y cube minus y cube equals 3. What do we get on the left side now? 12 minus 8 minus 1, that's 3y cube equal to 1 and y cube equals 1. And that gives us y equal to 1. Now, what about the corresponding value for x? इसको वापस input कर दें इस equation के अंदर. And that gives us x equals minus 2 into 1, which is going to give you minus 2. X की value आपके पास आ जाती है minus 2. So the other point that we were looking for here turns out to be minus 2 and 1. These are the two stationary points that we have on this curve. ये आपने figure out कर लिया. ठीक है, 0 and cube root of minus 3 and also minus 2 and 1. I hope that makes sense. That was question number 7. Let's move on to the next one. Okay, so it says let f of x equals this. We have to express f of x in partial fractions. Second part में integration है. Partial fractions, I would assume आप लोग कर लेंगे. ये proper fraction है, right? 2 numerator में, 3 denominator में, degree. इसकी form क्या बनेगी? इसकी form बनेगी आपके पास x square plus 9x divided by 3x minus 1 into x square plus 3. This is going to be a over 3x minus 1 plus bx plus c divided by x square plus 3. ठीक है, इसको आप पहले इस फॉर्म में लिख लेंगे. x square minus 9x, that's identical to a into x square plus 3 plus bx plus c whole multiplied by 3x minus 1. अब आप इसमें कुछ values of x input करेंगे और आपके पास a, b और c की values आएगी. You can try that. You can start by inputting x equals 1 over 3. वो इस bracket को 0 कर देगा. ये पहली value आप input कर सकते हैं. इससे एक value आ जाएगी आपके पास. इससे क्या आएगा बोला? इससे आपके पास आएगा a आ जाएगा. ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? x equals 0 input कर देंगे. x equals 0 input करने से क्या हो जाएगा? b eliminate हो जाएगा. आपके पास c की value आ जाएगी. और फिर आप क्या करेंगे? कोई भी और x की वैल्यू इनपुट कर दें. वन इजी वैल्यू दैट यू कैन यूज इज x equals 1. उससे आपके पास b की वैल्यू भी आ जाएगी. ठीक है, you can try this and see what that turns out to be. This is not that difficult. Now, since we need this for the next part, I am going to look for the values of a, b, and c that you get from this. इसी आप करेंगे, आपके पास आंसर्स आ जाएंगे. a equals 1, b equals 0, and c equal to 3. ठीक है, you can try this, you'll get these values. तो f of x आपके पास पर क्या हो जाएगा ये करने के बाद? ये आपने इसकी working show करनी है. Of course, I'm not doing that because in this particular session, we are only doing the more difficult parts. F of x equals 1 over 3x minus 1 plus 0x, so that's the 0, plus c, which is 3 over x square plus 3. आपका जो f of x है वो इस फॉर्म में आ चुका होगा. ठीक है,
ये हमने आप फर्स्ट पार्ट में कर लेंगे। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, उसने कहा हेंस फाइंड इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स विद लिमिट्स 1 to 3 गिविंग योर आंसर इन अ सिंप्लीफाइड एग्जैक्ट फॉर्म। एग्जैक्ट आंसर देना है आपने, ये इवैल्यूएट करना है। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, आपने इसके पार्शियल फ्रैक्शंस निकाल लिए हैं। लेट्स इनपुट दैट हियर, 1/3x - 1। एक आपके पास ये फ्रैक्शन है और दूसरी फ्रैक्शन क्या है, 3/x² + 3। इन दोनों को आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट्स इनपुट कर देंगे 1 से लेकर 3 तक। दैट्स ऑल दैट यू हैव टू डू हियर। नाउ व्हाट अबाउट द इंटीग्रल ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन? फ्रैक्शंस के आपके पास कौन कौन से रूल्स होते हैं? ln, tan इनवर्स, पार्शियल फ्रैक्शंस, स्प्लिटिंग द न्यूमरेटर, पॉलिनोमियल्स वाला मेथड जहां पे आपको डिवाइड करके कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर करना पड़ता है। राइट, सो यू गॉट ऑल ऑफ दीज मेथड्स दैट यू कैन यूज फॉर फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे कौन सा ये मेथड यूज हो सकता है? यू कैन सी, अगर हम लॉग वाला मेथड देखें, 3x - 1 का डेरिवेटिव क्या है? 3। अगर वो न्यूमरेटर में आ जाए तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल सकते, इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं यूजिंग ln फॉर्म। तो वी वांट 3 इन द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में 3 कैसे आ सकता है? वी कैन से लेट्स इनपुट 3 इन द न्यूमरेटर हियर लाइक दिस, और उसको बैलेंस करने के लिए बाहर 1/3 लगा दें। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 3/3x - 1 इनसाइड। इसकी इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। दिस इज द लॉग फॉर्म, रिमेंबर द लॉग फॉर्म। अगर आपके पास इस तरह से कुछ है, f'(x/f(x), इसकी जो इंटीग्रेशन होती है दैट्स जस्ट ln ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हम यहाँ पे यूज करते हैं। हम यहाँ हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा? 1/3 into ln ऑफ 3x - 1। ये तो आपके पास लेफ्ट साइड की इंटीग्रेशन, इस फर्स्ट इंटीग्रल की इंटीग्रेशन होगी। व्हाट अबाउट द सेकंड वन नाउ? डज द ln रूल अप्लाई हियर? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या होगा यहाँ पे? 2x। कैन वी हैव 2x इन द न्यूमरेटर हियर? वी कांट, बिकॉज हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x से मल्टीप्लाई करना जो है दैट्स नॉट अलाउड। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, वेरिएबल से नहीं कर सकते। सो व्हाट डू वी डू विद दिस देन? ये लॉग फॉर्म तो नहीं है, बट इज दैट एनी अदर फॉर्म? रिमेंबर tan इनवर्स की फॉर्म में आपको क्या चाहिए होता था? न्यूमरेटर में कोई कांस्टेंट और डिनोमिनेटर में x² प्लस सम कांस्टेंट। सो वी हैव एग्जैक्टली दैट फॉर्म हियर। ये tan इनवर्स वाली फॉर्म लग रही है। फॉर्मूला शीट में tan इनवर्स का रूल क्या रखा होता है? इट्स 1/(x² + a²). इसका इंटेग्रल उसने लिखा होता है फॉर्मूला शीट में कि ये है 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x/a। हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी तरह से। न्यूमरेटर में 1 चाहिए तो हम कांस्टेंट है 3, उसको उठा के बाहर लिख लेते हैं। अंदर हमारे पास क्या बचेगा? 1/x² + 3 इन द डिनोमिनेटर। अब a² चाहिए तो हम 3 को ऐसा लिख लेते हैं, हम कहते हैं 3 की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। वी कैड राइट इट लाइक दिस। ठीक है, अब ये वो वाली फॉर्म आ गई। a की जगह पे आपके पास क्या आ रहा है? √3 आ रहा है। तो बस आपने क्या करना है, वो अब रूल अप्लाई कर देना है। This is going to become, you have 3 outside as it is. Inside you apply this rule now, 1/a, that's 1/√3 into tan inverse of x/a. X is just x over a क्या है? √3. This is what your integral turns out to be. इसमें भी लिमिट्स इनपुट करेंगे। अभी हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। It becomes 1/3 into ln of 3x - 1, 3/√3, ये आपको दे देगा √3 into tan inverse of x/√3. You can keep it as it is. अच्छा, आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। लिमिट्स इनपुट करते हैं। लिमिट्स क्या इनपुट करनी है? 1 से लेकर 3 तक, 1 to 3. Okay, now let's input 3 in this integral first of all, and then subtract from that the case when you input 1. 1/3 into ln of 3 into 3 minus 1 plus √3 into tan inverse of 3/√3. This is what we get when we input x equal to 3. Subtract from that the case when you input x equal to 1, and that's going to give you 1/3 into ln of 3 minus 1 plus √3 into tan inverse of
1 over square root of 3. Okay, this is what we get. Now let's simplify this. So we have 1 over 3 into ln of 9 minus 1, which is ln of 8. Plus square root of 3 into tan inverse of 3 over square root of 3, that's just square root of 3. Minus 1 over 3 into ln of 2 plus square root of 3 into tan inverse of 1 over square root of 3. ठीक है. Now remember आपको रेडियंस में यूज करना होता है अपना कैलकुलेटर हमेशा इसमें. तो आप ये इवेल्युएट कर लें. tan इनवर्स ऑफ 3 इसकी आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो एक कॉमन एंगल का tan होता है. ये आप कैलकुलेटर से फिगर आउट कर लें बेशक, एंड दैट्स ओके. Making sure your calculator is in radian mode, that should give you I think pi over 3. Let me just confirm that. That is pi over 3 indeed. Yeah, so that's pi over 3. ये आपके पास आ जाएगा pi over 3. Okay, so let me be a bit careful here. यहाँ पे ऊपर में प्लस था, फिर यहाँ पे मैंने माइनस किया इधर बाकी दोनों टर्म्स को, तो इधर माइनस आना चाहिए था. This should have been negative, right? So let me change that to negative. Yeah. So we have minus 1 over 3 into ln 2 minus square root of 3 into tan inverse of 1 over square root of 3. Tan inverse of 1 over square root of 3 अगर आप करेंगे आपके पास वो आना चाहिए pi over 6. Okay. Now we just need to simplify this. उसने क्या कहा है? Simplified exact form आपको चाहिए. Remember, in your final answer, you have to have only one ln term. You can't have more than one ln terms. ln 8 को हम क्या कर सकते हैं? ln 8 की जगह पे हम लिख सकते हैं ln 2 का cube. Right? So this is going to become 3 over 3, then 3 आके multiply होगा by. Right? So इससे क्या मिल जाएगा? 3 over 3 ln 2. 3 और 3 तो cancel हो जाएंगे. Plus square root of 3 pi over 3 और यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 3 पाई ओवर 6. ये पूरा कैलकुलेटर में डाल दें. कैलकुलेटर में डाल दें, आपको एग्जैक्ट फॉर्म में कैलकुलेटर को दे देना चाहिए. लेट मी जस्ट ट्राई दैट. फ्रैक्शन स्क्वायर रूट ऑफ 3 पाई, रिमेंबर स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, स्क्वायर रूट के बाहर है. Divided by 3, subtract from that. Use the fraction button on a calculator, please. In the numerator, have square root of 3 now, and also pi outside the square root divided by 6. If I put this whole thing on my calculator is not giving me an exact answer. Okay, so फिर आपको खुद से करना पड़ेगा. अब कैसे करेंगे? LCM ले लें. LCM कैसे लेंगे? इसका डिनोमिनेटर 6 है, इसका डिनोमिनेटर भी 6 कर दें. कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 into square root of 3 pi over 6. Can we write it like this? Right? Then we have minus square root of 3 pi over 6. दोनों का same हो गया denominator. And we have minus 1 over 3 ln 2 as well. अब ln 2 minus 1 over 3 ln 2, what is that going to give us? 1 minus 2, 1 over 3, 2 over 3 hota hai, so that's 2 over 3 times ln of 2. And then we have this thing, 2 under root 3 pi minus under root 3 pi, that is going to be just under root 3 pi divided by 6. And that's the final answer that we were looking for. ये आपके पास आता है exact form. Okay, I hope that makes sense. That was the second part of this question. Question number 8. All right, let's move on. Let's move on to question number 9. This is on vectors, and then question number 10. Okay, let's do both of these. 9 करते हैं पहले. It says the lines L and M have vector equations. These respectively wherein they are constants. Given that L and M intersect, show that 2b minus 4 equals 4. Now remember what this means. If two lines intersect, इसका मतलब ये है हमारे पास जो दो equations बनेगी, जो उनको equate करेंगे,
तो जो दो इक्वेशन आएंगी वो थर्ड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, बस हमने वो यूज करना है यहाँ पे। वी हैव टू लाइंस गिवन, एक लाइन एल है और दूसरी लाइन एम है, तो हम इनको पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, वेक्टर फॉर्म के अंदर इकट्ठा लिख लेते हैं। So let's say we have L here on the left side and M here on the right side. Equation L क्या है आपके पास? -1. Okay, let me actually write it like this first of all. आसान हो जाएगा। L यहाँ पे रहने देते हैं और let's write down both of those equations first of all. Line L की equation क्या है? R equals -1, 3, 4 plus lambda into 2 minus 1 minus 1. ठीक है, और लाइन एम की इक्वेशन क्या है? 5, 4, 3 प्लस म्यू इंटू ए बी एंड 1। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। उसने कहा गिवन दैट दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट, इन कैसे आप प्रूव करते हैं कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं? दोनों को इक्वेट करते हैं और फिर हम देखते हैं उसके बाद क्या करना है। दोनों को इक्वेट करते हैं सबसे पहले, दैट्स हाउ वी स्टार्ट, राइट। इक्वेट करने के लिए पहले सिंप्लीफाई कर लें इक्वेशंस को। लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन आपके पास क्या है? -1 + 2 lambda, then you have 3 minus lambda and 4 minus lambda. That should equal 5 plus a times mu, 4 plus b times mu, and 3 plus mu. Now, if these two vectors are equal, that means their components have to be equal. So we get three equations from that: equation 1, equation 2, and equation 3. तीन equations आ गई। इनमें से कोई भी दो equations आप उठा लें और उनको solve कर लें simultaneously. Okay, pick any two equations. Now, let's say if I were to choose 1 and 3 here, the reason for that is third के अंदर हमारे पास ए और बी दोनों नहीं आ रहे, तो इसको शायद यूज करना आसान हो थोड़ा सा। आप कोई भी दो ले सकते हैं, doesn't really matter. So let's say I take 1 and 3. Okay. Now, if I take 1 and 3, let's see what I get from that. 1 plus 2 lambda equals 5 plus a times mu. That's one equation. The other one is 4 minus lambda equals 3 plus mu. इनको हमें simultaneously solve करना है और lambda और mu की values निकालनी है। Now, how do we do that? We can make lambda और mu the subject from this equation. That's one possibility. और दूसरी में जाके input कर दें। इसमें से अगर हम mu को subject बनाते हैं, let's say, तो हमारे पास क्या आता है? 3 will go to the other side. It will become 4 minus 3, and that becomes 1, and then 1 minus lambda. This is the value of mu. This is what we end up getting from mu in terms of lambda. इसको दूसरी equation में जाके input कर दें mu की जगह पे, and that gives us 1 plus 2 lambda equals 5 plus a times 1 minus lambda. Now let's solve this equation and find what lambda turns out to be. So we have 5 plus a minus a lambda here. Take lambda terms to one side. That gives you 2 lambda plus a lambda. Everything else on the other side. 5 minus 1, that gives you 4 plus a. ठीक है, अब lambda यहाँ से common ले लेते हैं. That gives us lambda into a plus 2. Yeah, 2 plus a, doesn't really matter. On the other side, you have a plus 4, and lambda turns out to be a plus 4 divided by a plus 2. This is the value of lambda that we're getting in terms of a. Now we put this in the other equation. जाके वहां पे input कर दें, corresponding value of mu find कर लें. Mu is 1 minus a plus 4 divided by a plus 2. इसको आप simplify कर सकते हैं, LCM ले लें, a plus 2 यहाँ पे जाके multiply हो जाएगा, and we get a plus 2 minus, remember this minus sign is with this whole thing. ये बहुत ही common error है कि लोग क्या करते हैं, सिर्फ a के साथ यहाँ पे minus लगा देंगे और 4 को प्लस रहने देंगे। ये रिमेंबर, ये फ्रैक्शन के साथ माइनस लगा हुआ है। जब फ्रैक्शन के साथ माइनस लगा हुआ है तो वो a से भी मल्टीप्लाई होगा, 4 से भी मल्टीप्लाई होगा। सो वी हैव a plus 2 minus a minus 4 like this divided by a plus 2, and that gives me mu equal to -2 because a and a get cancelled. We have -2 left divided by a plus 2. That's the value of mu that we get. ये दो इक्वेशंस में हमने इनपुट किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 के अंदर,
उससे हमारे पास ये लैम्डा और म्यू की वैल्यूज आ गई। अब उसने कहा है कि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, उसने हमें बताया हुआ है इफ दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट दैट मींस जो वैल्यूज ऑफ लैम्डा और म्यू आ रही हैं हमारे पास दे मस्ट सैटिस्फाई द थर्ड इक्वेशन एज वेल। जो तीसरी इक्वेशन हमने नहीं की यूज की, अभी कौन सी इक्वेशन नहीं यूज की? इक्वेशन टू ने यूज की। ये दोनों वैल्यूज इक्वेशन टू को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। So now what we do is we input these values in equation 2. We put lambda and mu in equation 2. ये दोनों values equation 2 में input कर देते हैं। ठीक है? Now let's see what we get when we do that. Equation क्या है? 3 minus lambda, so that's 3 minus lambda, which is a plus 4 divided by a plus 2. On the other side, we have 4 plus b times mu. 4 plus b into mu, which is minus 2 over a plus 2. तो अगर ये इक्वेशंस, अगर ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो ये इस इक्वेशन को भी सैटिस्फाई करनी चाहिए। हमें प्रूव क्या करना है कि 2b minus a that equals 4। हम इसको अब आगे सॉल्व करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको देखते हैं हमारे पास वो रिलेशनशिप आ सकता है किसी तरह से। लेट्स टेक a plus 2 as LCM on the left side and also on the right side। इससे क्या होएगा? 3 into a plus 2 minus a plus 4 on the left side divided by a plus 2. On the right side, we have 4 into a plus 2 plus b into minus 2. That's going to be minus 2b divided by a plus 2. Sorry, so minus 2b whole divided by a plus 2. ठीक है, खत्म हो जाएगा denominator से, that gets cancelled. So let's simplify both sides. We have 3a plus 6 minus a minus 4, that equals 4a minus, in fact, plus 8 minus 2b. Now the equation that we have to show is like this. A और B terms left side पे लेकर जानी है और constant right side के ऊपर. Let's do that. Left side पे हमारे पास क्या आ रहा है? 3a minus a, that's 2a. 2a में से ये 4a minus कर दें. 2a minus 4a, that's going to give us minus 2a. Okay. Then look at the b terms. We have only this b term. That's minus 2b. वो left पर आएगा तो क्या हो जाएगा? Plus 2b. Right? और constant को उधर ले जाएं तो 8 plus 4, that's 12. 12 minus 6, that should give us 6 on the right side. This is what I'm getting, but it's not what is needed there. And that means that we have done some careless error somewhere. Okay. So now we need to look for that careless error. Now this is a pretty tricky part in the exam. Careless error ढूंढना जो है यहाँ पे काफी मुश्किल होगा. Let's look for that. Okay, so Pakiza has come to our help here. Equation 1, it's minus 1, not 1. Okay, so equation 1. Let's have a look at that. Yeah, sorry about that. Thank you for pointing that out. So equation 1 हमने यहाँ पे गलत लिख दिया. Equation 1 में left side पे होना चाहिए था minus 1 plus 2 lambda, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया. So that's why we're not getting that final result. Let's put minus here. ये भी minus हो जाएगा. अभी आपने अगर आप correction जब कर रहे होते हैं ना, आपको काफी careful रहना होता है कि आप उसको प्रॉपर्ली हर जगह पे चेंज कर रहे हो. तो अब उसको सही तरह से फॉलो करें. यहाँ पे -1 आ गया. अब -1 फिर जाके राइट साइड पे गया था. वो 5 - 1 पहले 4 हो गया था. अब वो 6 हो जाएगा. यहाँ पे 4 की जगह पे दिस शुड बी 6. Then we have a plus 6 on the right side. This is a plus 6. A plus 4 की जगह पे भी यहाँ पे a plus 6 आना चाहिए. और राइट साइड पे अब इसको इनपुट करेंगे तो इधर a plus 6 होना चाहिए. डिनोमिनेटर में भी गेट a plus 2 minus a minus 6. So that gives us -4 in the numerator. mu की वैल्यू यहाँ पे -4 over a plus 2 आ जाती है. ठीक है. अच्छा, अब ये हम नीचे आते हैं. लैम्डा और म्यू की वैल्यूज इनपुट की थी. म्यू की जगह पे दिस शुड बी -4
our lambda was a plus 6. Okay, now 3 into a plus 2 minus into a plus 6. This should be a plus 6 here. On the right side, we have 4 into a plus 2 minus 4 times b. Acha, a plus 2 khatam ho gaya. We have 3a plus 6 minus a minus 6 here. On the right side, we have 4a plus 8 minus 4b. And then we have 3a minus a on the left side. That's 2a. 2a minus 4a. That's going to give us minus 2a. That's okay. Then on the left side, we have no b's. Right side पे आपके पास एक 4b आ रहा है, तो minus 4b आ रहा है, वो लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, plus 4b हो जाएगा. ठीक है, constant जो है लेफ्ट साइड पे 6 and minus 6 they get cancelled. Right side पे we only have 8 left, so we get minus 2a plus 4b equals 8. इसको हम simplify अगर कर लें, 2 से divide कर दें पूरी equation को, that's going to give us 2b minus a equals 4, and that is what we had to prove there. 2b minus a equals 4. Okay. All right. Thank you, Pakiza, for pointing that out. That was the first part here. Let's move on to the next one. Now it says, given also that L and M are perpendicular, find the values of A and B. So now we have another piece of information given, and that is that these two lines L and M are perpendicular to each other. Perpendicular lines में क्या होता है, उनका dot product 0 होता है, right? लेकिन जब lines की हम बात कर रहे होते हैं perpendicular होने की या parallel होने की, तो हम क्या चीज देख रहे होते हैं, उनका direction vector देख रहे होते हैं essentially. So we are going to be looking at this direction vector and this direction vector. कि इन direction vectors का जो dot product होगा, that should be equal to 0. All right, directions of line L and M, their dot product has to be 0. That's what it means. अब L का direction vector क्या है? 2 minus 1 minus 1. Let's put that here. 2 minus 1 minus 1 dot A, B, and 1. This should equal 0. Let's simplify this. We get 2a minus b minus 1 equals 0. And we get another equation in terms of a and b from this. 2a minus b equals 1. एक equation हमारे पास पिछले part में थी, that was 2b minus a equals 4. All you have to do now is solve these two equations simultaneously, and that is going to give us the values for a and b. First equation में से अगर हम b को subject बना ले तो हमारे पास क्या आएगा, 2a minus 1. We can put that in the other equation. That would give us 2 into 2a minus 1 minus a equals 4, and that gives us 4a minus 2 minus a equals 4. And we have 3a equals 6, and the value of a turns out to be 2 from this. Okay, that's one thing that we were looking for. A turns out to be 2. Put that in the other equation, and that will give you the corresponding value for b as well. So b equals 2 into 2 minus 1, and b is equal to 3. Okay, so the second part was pretty straightforward. ये आपके पास a और b के values आ गए. Okay. Now in the third part it says, when a and b have these values, find the position vector of the point of intersection of L and M. All right. अब देखें, हमने ये सारी working first part में की हुई है. आपको वो सारी working दोबारा करने की जरूरत नहीं है. हमने first part में ये find किया हुआ है कि किस value of lambda और म्यू के लिए ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं. जब ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो लैम्डा इज a plus 6 over a plus 2 and mu is minus 4 over a plus 2. तो आप किसी भी एक में इनपुट कर दें. लेट्स से मैं लैम्डा के अंदर a की वैल्यू इनपुट कर देता हूँ. रिमेंबर लैम्डा वाज a plus 6 over a plus 2. इसके अंदर अगर आप a की वैल्यू इनपुट कर दें, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a? A is equal to 2. Let's put that here. That gives us lambda equal to 2 plus 6 divided by 2 plus 2. And that turns out to be lambda equal to 8 over 4, which is 2. Lambda की value 2 आ जाती है. This is the value of lambda that is going to give us the point of intersection. अब हमारे पास दोनों lines की equations थी. Left वाली में lambda आ रहा है, line L की equation में, इसमें बस input कर दें.
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो पोजीशन वेक्टर है आपके पास, वो आपके पास इससे आ जाएगा. What's the equation of that line? It's -1 plus 2 lambda. 3 minus lambda and 4 minus lambda. Yeah. इसके अंदर आप lambda की value 2 input कर दें and see what that gives you. -1 plus 2 into 2, 3 minus 2 and 4 minus 2. And that is going to give you 3, 1, 2. Right? This is the position vector of the point of intersection of L and M. And that's what we were looking for. Okay, that was the last part of this question. Let's move on and do question number 10 quickly, and then we end. It says the complex number -1 plus square root of 7 iota is denoted by u. It's given that u is the root of the equation 2x cubed plus this. Find where k is a real constant. Find the value of k. ओके, तो उसने कहा हुआ है कि ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है. ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके अंदर इनपुट कर दें, उससे के की वैल्यू आ जाएगी. ये अगर ये इसका सोल्यूशन है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट? सो लेट्स इनपुट दिस हियर. We have 2 into -1 plus square root of 7 iota whole cube plus 3 into -1 plus square root of 7 iota whole squared plus 14 into -1 plus square root of 7 iota plus k equals 0. ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है. ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये अलग से एवेल्युएट कर लेते हैं. पहले स्क्वायर एवेल्युएट कर लें पहले. -1 plus square root of 7 iota का स्क्वायर क्या होगा? Let's evaluate that first. A plus b whole square, so -1 का whole square plus 2 into -1 into square root of 7 iota plus square root of 7 iota का whole square. And that's going to give you 1 minus 2 square root of 7 iota plus 7 iota square. Remember, iota square -1 होता है, तो 1 minus 7 हो जाएगा. ये आपके पास आ जाएगा -6 minus 2 square root of 7 iota. That's the square of this number. अब इसका क्यूब भी evaluate कर लें. 1 plus square root of 7 iota का whole cube. We could write that as 1 plus square root of 7 iota into 1 plus square root of 7 iota का whole square. अब square हमने evaluate कर लिया हुआ है पहले, वो यहाँ पे input कर दें. That's -6 minus 2 into square root of 7 iota. Let's simplify this. 1 into -6 is -6. 1 into that second term is going to give us -2 square root of 7 iota minus 6 square root of 7 iota plus, no, minus 2 into 7, which is going to be 14 iota square. इसको simplify करेंगे तो ये -6 है, ये plus 14 हो जाएगा. 14 minus 6 is going to give you 8, and then -2 square root of 7 and -6 square root of 7. This becomes -8 square root of 7 iota. This is what the cube term turns out to be. Okay, ये दोनों आपने evaluate कर लिए. अब बस आके इस पे input कर दें और आपके पास इससे k की value आ जाएगी. ठीक है, let's do that now. Now I'm running out of space here, so if you end up having this problem in the exam, आप क्या करेंगे, आपके पास ये additional pages दिए होते हैं. 2 pages होते हैं मोस्टली एंड पे. यहाँ पे एक है, एक ब्लैंक पेज भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं इसको. बट व्हेन यू डू दैट, मेक श्योर दैट यू राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर हियर क्लियरली. क्वेश्चन में आपने लिखना है कि आपने कंटिन्यू किया हुआ है एंड पे. यहाँ पे आप लिख देंगे कंटिन्यूड एट द एंड, और एंड पे जाके आप क्वेश्चन नंबर और पार्ट क्लियरली मेंशन करेंगे. ठीक है, आई एम गोना डू ऑन द साइड हियर. यहाँ पे साइड पे हम कर लेते हैं. क्यूब क्या आ रहा है? 2 into -6 minus 2 square root of 7 iota. ये हमने क्यूब evaluate किया नीचे. Sorry, this was square. क्यूब नीचे था. 8 minus 8 square root of 7 iota. 8 minus 8 square root of 7 iota plus 3 into इसका square. Square क्या था? ये हमने इधर evaluate किया. -6 minus 2 square root of 7 iota
and then we have plus 14 into minus 1 plus square root of 7 iota plus k equals 0. अब इसको simplify करें, we get 16 minus 16 square root of 7 iota minus 18 minus 6 square root of 7 iota minus 14 plus 14 square root of 7 iota plus k equals 0. ठीक है? Now we have 14. K is a real constant. K is supposed to be real. इसको देख लें, this should be cancelled. ये K उसने कहा है real है, तो iota वाली terms यहाँ पे cancel होनी चाहिए थी. क्या ये cancel हो रही है? ये नहीं cancel हो रही है. That means we have another careless error here, unfortunately. So let me look for that now. एक तो ये minus 14, yeah, वो तो सही है. Okay, let me just check this again. This working? Okay. Minus 1 plus square root of 7 iota. इसका स्क्वायर हमने किया, स्क्वायर करके हमारे पास क्या आ रहा था, -1 का स्क्वायर 1, that is fine, -2 square root of 7 iota plus 7 iota square. Okay, so that gives us -6 minus 2 square root of 7 iota. This looks fine. Then we have 1, yeah, okay, so there is the error. यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट में देखें, इधर मैंने स्क्वायर इवैल्यूएट किया था, वो तो सही था. क्यूब इवैल्यूएट करते हुए I again did the same thing. यहाँ पे 1 के साथ माइनस था, which I ended up missing here. Now how did I figure that out? Because यहाँ पे उसने कहा हुआ था k की वैल्यू रियल है, अब यहाँ पे तो k की वैल्यू रियल नहीं आ रही थी, so that means there's some problem. So यहाँ पे मैंने माइनस मिस कर दिया था. Okay, so what do we get then? इसको यहाँ पे हम माइनस लगा लेते हैं. स्क्वायर तो हमने सही इवैल्यूएट किया हुआ था पहले, that was okay. इधर 1 के साथ एक माइनस होना चाहिए था, 1 के साथ जब एक माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये +6 आना चाहिए यहाँ पे, और उधर फिर भी इधर भी प्लस आना चाहिए. So 6 plus 14, that is therefore going to become 20 here, and then 2 minus 6 यहाँ पे आना चाहिए था 4. अच्छा, अगर ये हो जाता तो क्यूब हमारे पास है 20 minus 4 square root of 7 iota. 20 minus 4 square root of 7 iota. इस तरह के क्वेश्चंस में वाकई में केयरलेस एरर्स होते भी हैं काफी ज्यादा, साइन के एरर्स बहुत ज्यादा होते हैं जब वेरिफिकेशन करनी होती है. So you have to be very careful. If you try to be in a hurry like I was here, you can end up doing errors like this. Okay, so this is giving me 40 then, and minus 8 square root of 7 iota. Let's see if this is working now. Yeah, so now the iota terms get cancelled. देखें, ये cancel हो गई, ये तीनों. 14 minus 6 minus 8 वो eliminate हो जाएगा, and we are just left with the real numbers. 40 minus 18 minus 14. 18 और 14 हो गया 32. 32 40 में से minus किया, so we have 8 minus k, no, 8 plus k equals 0. And the value of k therefore turns out to be -8 from this. That is what we were looking for. ठीक है, k की value -8 आ गई. That was the first part of this question. Okay, second part says find the other two roots of this equation. That's a 4-mark question. Now if you remember, हमने polynomials में, in fact complex numbers में हमने एक चीज की थी, that was the sum of roots. That's really handy for such questions because आपको वो पूरी division process नहीं करना पड़ता, आप इसको बहुत जल्दी figure out कर सकते हैं. कैसे? सबसे पहले तो आपका polynomial क्या है? This is 2x cube plus 3x square plus 14x plus k equals 0. This is what the polynomial is. K की value हमने figure out कर लिया है, so that's -8. Let's input that here. This is the polynomial. We know one solution of this polynomial already, and that one root of this polynomial, which is -1 plus square root of 7 iota. Let's call that x1. x1 हमारे पास क्या है? -1 plus square root of 7 iota. That's one possible answer. अब दूसरा एक पॉसिबल आंसर क्या हो जाएगा? इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट्स. रियल कोएफिशिएंट वाले पॉलिनोमियल के अंदर जो आपके रूट्स होते हैं वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट होते हैं. कॉम्प्लेक्स रूट्स अगर होते हैं वो एक दूसरे का कॉन्जुगेट होते हैं.
तो x2 हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा रूट हमारे पास आ जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा. दिस इज अनदर रूट दैट वी हैव. नाउ हाउ डू यू फाइंड द थर्ड रूट? हाउ डू यू फाइंड द थर्ड रूट? थर्ड रूट हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला यूज करके, राइट? सम ऑफ रूट्स of a polynomial, remember what that was? That was minus b over a, right? Minus b over a. So remember this. ये मैंने यहाँ पे कहीं आपको दिखाया होगा पहले, नोट्स में इनफैक्ट होना चाहिए. Complex numbers, sum of roots of polynomials. Yeah. So this is the rule that we have. Sum of roots of any polynomial is given by minus b over a. This is really handy in complex numbers because यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं, sum of roots minus b over a है. तो इस polynomial के अंदर you can say this is a, this is b, this is c and this is d, right? a और b की values क्या है? 3 and 2. So sum of roots इसमें क्या होना चाहिए? minus 3 over 2. That means if we have 3 roots of this equation, it's a cubic polynomial, x1 plus x2 plus x3, this should equal minus 3 over 2. Now we know 2 of the roots already, -1 plus square root of 7 iota and -1 minus square root of 7 iota. x3 हमारे पास इससे आ जाएगा, जो एक रियल नंबर होएगा वो आप देख लें क्या आता है, प्लस स्क्वायर रूट 7 iota और माइनस स्क्वायर रूट 7 iota कैंसिल हो जाएंगे. -1 that gives us -2 plus x3 equals -3 over 2. 2 goes to the other side and we get 2 minus 3 over 2 from that, which is going to turn out to be 1 over 2. And that is your third solution. Okay, this is the third solution that we're getting, 1 over 2. ये आपके पास तीनों रूट्स आ गए. ठीक है. Yes, Pakiza, I will be doing all 2022 papers inshallah. कुछ papers पूरे कर रहे होंगे, कुछ papers के सिर्फ मुश्किल वाले parts. ठीक है. That was part B. Some October, November next कर रहे होंगे. From next week inshallah, जब हमारे ये papers खत्म हो जाएंगे. Now let's look at the third part. Third part में आपके पास एक argument diagram. It says sketch the locus of points representing the complex number z satisfying this equation z minus u equals 2. Now this is pretty straightforward. आप इस notation को कैसे समझते हैं? This means distance of z from the point u, this is equal to 2. तो आप क्या करेंगे? U is the reference point. पहले आप u plot कर लेंगे और उससे आपने कहना है कि डिस्टेंस 2 यूनिट्स होना चाहिए, तो वो सर्कल बन जाएगा. This is pretty straightforward. This locus in this particular question, this is the imaginary axis, this is the real axis. U point क्या है? इसने दिया हुआ है यहाँ पे कहीं पे U. Yeah, so this is U, -1 plus square root of 7 iota, 0. Let's say we have 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, -1, -2, -3, -1 plus square root of 7 iota. Let's plot that point. Remember, आपको sketch करना है, so you can't represent the exact number, but square root of 7 क्या होता है? It's a number between 2 and 3. आप कैलकुलेटर पे चेक कर लें, रफली क्या आता है. स्क्वायर रूट ऑफ 7 is 2.64. तो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आयोटा, वो कहाँ पर आ रहा होगा नंबर? वो कहीं इधर आ रहा होगा, इस पॉइंट पे कहीं पे, इस रीजन में. दिस इज u. ठीक है. अब ये पॉइंट u है, इससे डिस्टेंस z का कितना होना चाहिए? इससे डिस्टेंस होना चाहिए z का 2 यूनिट्स. तो आप क्या करेंगे? इस पे 2 यूनिट्स का एक सर्कल बना देंगे एंड दैट्स इट. ओके, 2 यूनिट्स रेडियस का एक सर्कल बना देंगे विद सेंटर एट u. Okay, now it's not good enough. Let's do that on the side here. इसके ऊपर unfortunately सही बनता नहीं है. आप ये कंपास से बनाएंगे सर्कल, अदरवाइज फिर आपसे नेक्स्ट पार्ट जो है ना काफी मुश्किल से होता है. इसमें एग्जामिनर अप्रिशिएट्स अगर आप थोड़ा सा एक्यूरेसी अपनी दिखाएं यहाँ पे, अदरवाइज फिर
वो पता भी नहीं चल रहा होता कि सर्कल लग भी रहा है कि नहीं लग रहा। तो सर्कल सही होना चाहिए, रेडियस 2 आपको चाहिए, तो आप उसको रफली देख लें, रेडियस 2 बन जाए, सेंटर उस पर रख के। सो रिमेंबर राइट साइड पे 1 तक जा रहा होगा, लेफ्ट साइड पे 3 तक जा रहा होगा। तो इसका ध्यान रखना है, लेफ्ट साइड पे कहाँ तक आपने जाना है, ऊपर कहाँ तक जाना है, 2.6 था, ऊपर 4.6 के आसपास, और नीचे 0.6 के आसपास। सो दिस इज व्हाट द सर्कल माइट लुक लाइक ऑलमोस्ट, राइट? ये आपका लोकस हो गया। You have point U in the middle, and the radius of the circle is 2 units. That's what you have to do in this part. ठीक है? The second part, the last part says, determine the greatest value of argument Z of for points on this locus, giving an answer in radians. Argument of Z for points on this locus, उसकी greatest value आपको figure out करनी है. Remember, ये हमने पहले discuss किया हुआ है. आपके पास ये points है locus पे. ग्रेटेस्ट आर्गुमेंट रिमेंबर आप कहाँ से मेजर करते हो, आर्गुमेंट जी लिखा हुआ है ना सिर्फ, तो उसका मतलब आपको ओरिजिन से मेजर करना है। तो ओरिजिन से आप देखेंगे ग्रेटेस्ट आर्गुमेंट कहाँ पे हो सकता है। ये नॉर्मली टेंजेंट होता है, लीस्ट होता तो ये वाला पॉइंट बन रहा होता, लेकिन आपको ग्रेटेस्ट चाहिए तो आप देखते जाएंगे ग्रेटेस्ट एंगल आपको कैसे होता है। रिमेंबर आप एंगल मेजर कहाँ से करते हैं, एंगल आप मेजर करते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, यहाँ से मेजर एंगल कर रहे होते हैं। तो इससे आपको ग्रेटेस्ट एंगल चाहिए तो आप यहाँ से चलते जाएंगे। ग्रेटेस्ट आर्गुमेंट कैसे होएगा, as you keep going on and on and on until you get this point here, जहाँ पे आपकी लाइन टेंजेंट बन रही हो सर्किल के इस तरह से। Okay, so this is the point Z that is going to give you the maximum argument, the greatest possible argument. And now the problem is, how do you find this argument? ये angle figure out करना है, ये कैसे figure out करें? We can use trigonometry for this. Let's see what we can do for that. जैसे करें, ये हमें पॉइंट नहीं पता, बट हमें ये पता है, रिमेंबर इस तरह से सर्कल वाले के अंदर ना आप अक्सर क्या कर सकते हैं, ये एक सेंटर से लाइन ज्वाइन करके ना परपेंडिकुलर आप बना सकते हैं, और सर्कल की प्रॉपर्टी पर यूज कर सकते हैं कि ये जो रेडियस है इस तरह से, दिस इज गोइंग टू मेक अ 90 डिग्रीज विद द टेंजेंट। ये 90 डिग्रीज बन रहा है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्रीज बन रहा है तो अब हमें क्या इंफॉर्मेशन पता है, वी कैन फाइंड द hypotenuse there, that is possible. हमें point पता है, yeah, so remember this point is square root of 7. This is something that we know as well. अब हम ये angle कैसे figure out कर सकते हैं, yeah, so we also need know this length. So we know this length is 2, this length is 2, ये हमें पता है। और हमें क्या पता है, और हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि ये लेंथ अगर हमें ट्रायंगल बनाए इस तरह से, दिस ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में why is it only 2 marks? This would require more working. इसमें वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। Okay, so one possible method is, maybe there is a more efficient way of doing this, but one thing that I can think of is कि आप क्या करें, आप इन पॉइंट्स को पहले मार्क कर लेते हैं, it will be easier to think of them. Let's say this point is O. No, that's O is already the origin. Let's call this C, and let's say this point is B, and I'm also going to call this point here something. इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, आप स्क्वायर रूट 7 लिखा हुआ है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट A. ओके, अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये पूरा एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल, ठीक है। नाउ वन पॉसिबल वे ऑफ डूइंग दिस कुड बी, आप ये करें कि ये एंगल तो पता है 90 है या π/2 है रेडियंस में, आप ये एंगल फिगर आउट कर लें, इतना पार्ट, और आप ये वाला एंगल फिगर आउट कर लें, ये दोनों एंगल फिगर आउट कर लेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट इससे आ सकता है। Yeah, so that's what I can think of, even though it's going to be slightly long, but yeah, that's what you can do.
अजीर मैक्सिमम एंगल वाली वर्किंग, आपको बस ये देखना है ओरिजिन से आप इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर आपको मैक्सिमम पॉइंट कहाँ पे मिल सकता है. सो इफ यू लुक एट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, आपको P3 क्रैश कोर्स में ना बिल्कुल एंड पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की वीडियोस मिलेंगी. उसमें मैंने टाइटल किया हुआ है लोसाई वाला पार्ट जो है. लोसाई की आप सेकंड वीडियो देखेंगे, उसमें आपको इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी. ठीक है, अच्छा लेट्स फाइंड दिस एंगल. इस एंगल के लिए हम क्या करें अब, लेट्स ब्रेक इट डाउन. पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये एंगल फिगर आउट कर रहा हूँ. इतना पार्ट, लेट्स कॉल दिस समथिंग, लेट्स कॉल दिस एंगल अल्फा. ठीक है, मैं ये वाला एंगल फिगर आउट कर रहा हूँ. फॉर दिस वी कुड से for this we could say that this length is 1 unit. AC 1 है, right? AC length 1 है, remember? OA length कितनी है? Square root of 7 है. और BC length कितनी है? 2 units है. ये लेंथ हमारे पास है. ठीक है, अब अल्फा फाइंड करना है. अल्फा के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं tan of alpha is equal to perpendicular, इसके opposite side है, that's 1 unit, over the base, ये वाली side OA, that's 3. इससे क्या होगा, हमारे पास अल्फा आ जाएगा पहले तो, वो वाला पार्ट. tan inverse of 1/3. Let's evaluate this. This gives me 0.32175, so that's 1/8. ये मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई. ठीक है, ये वाला एंगल. अब मुझे क्या करना है, ये वाला एंगल निकालना है किसी तरह से. लेट्स कॉल दिस एंगल बीटा. कॉल दिस एंगल बीटा. अब ये एंगल बीटा कैसे निकालेंगे, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल में क्या पता है, BC की लेंथ पता है, लेकिन हमें OC लेंथ नहीं पता. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, OC लेंथ निकाल लेते हैं पहले. OC के लिए वी कैन यूज दिस राइट एंगल ट्रायंगल. इसका हाइपोटेन्यूज OC है. So let's find the length OC first of all. OC square is equal to, ये लेंथ 3 है, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 7 है, रिमेंबर, और ऊपर वाली लेंथ 1 है. सो ये से square root of 7 whole squared plus 1 squared, and that gives us 7 plus 1, which is 8. So that's square root of 8. OC की लेंथ हमारे पास आ जाती है square root of 8. ठीक है, OC आ गया. जब OC आ गया आपके पास, तो अब हम क्या कर सकते हैं, बीटा निकालने के लिए. बीटा के लिए OC is hypotenuse and BC is opposite. Opposite और hypotenuse में कौन सी रेशियो होती है, साइन. तो we say sine of beta is equal to opposite, which is 2, over the hypotenuse, which is square root of 8. इससे क्या होगा, हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी sine inverse of 2 divided by square root of 8, and that gives me pi over 4. ये आ गया pi over 4. So what's the argument then? How can this be pi over 4? That length is 2. It's not an isosceles triangle. 2 over square root of 8. Does that make sense? Can it be isosceles triangle? Okay, yes, this could be an isosceles triangle. That's possible. That's fine. There's a rotation area. Okay. So this is the angle that we're getting from this. That's okay. Our argument, greatest argument क्या आएगा, इन तीनों का sum कर ले. ये total angle. This is the argument. That's what we are looking for. So the greatest argument therefore is going to be just the sum of those angles. हमें इतना angle पता है, right side वाला, this is pi over 2. So we start from that. And then alpha is 0.3218 plus beta, which is pi over 4. ये आप देख लें आपके पास क्या आता है, इन सबको ऐड कर लें, and that will give you the result. Pi divided by 2 plus 0.3218 plus pi divided by 4. And that is giving me 2.677. Let me just check this. Okay, I'm sorry about this. I did a mistake here. Sorry about that. ये मैंने length square root of 7 लेनी थी, मैंने इसकी जगह पे 3 ले लिया. Alpha के लिए I wrote square root of I wrote 3 there instead.
of square root of 7. This should have been square root of 7. Okay, so ये clutter बहुत ज़्यादा हो गया, तो आपको ये थोड़ा सा clear रहना है यहाँ पे. ये जो length OA है, this is square root of 7 and not 3. मैंने 3 कर दिया गलती से, तो अगर उसको square root of 7 करते हैं, that should give me tan inverse of that, which is 0.3614. This is 3614. So this should have been 0.3614 here. And that gives me answer plus pi divided by 4 plus pi divided by 2. And that's turning out to be 2.7175. 2.718. That's the answer that we're getting here. उसने कोई question instruction तो नहीं दी, नहीं radians में बस answer देना है. This is what you could leave it as 2.718. That's your final answer. That's the greatest argument that we were looking for. Okay, that's too much working for 2 marks. Unfortunately, I think this is probably the way to do it. I can't find a shorter way of doing this. इसका कोई इससे ज़्यादा efficient तरीका नहीं लगा. So that's just 2 marks. Okay, that's it. I'll see you again after Eid now. A very happy Eid to all of you. Wish you all the best for your exams as well. Make sure that you take out some time for studying during the Eid break as well. We are not going to have a class tomorrow, or most likely the day after tomorrow as well. Our next class is going to be on Inshallah. All right. I'll see you again, hopefully on Monday. Allah Hafiz.